Yes. Hi everyone, welcome to yet another Hangout of Swaraj Abhiyan. Today we have with us well-known retired professor of JNU and convener of Swaraj Abhiyan, Professor Anand Kumar, who will be discussing with us role of youth in realizing alternative politics. My name is Priyanka and I'm going to moderate this Hangout today. I welcome and thank you, sir, for joining us today to share your opinions on this topic and also respond to questions that we have from across the globe. हमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले हैं तो ये बाइलिंगुअल हैंगआउट होगा वेलकम अगेन सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बिगिन विद योर ओपनिंग रिमार्क्स Thank you, Priyanka ji. I welcome you and all others in this Google Hangout of Swaraj Abhiyan. The previous Google Hangouts have been a very positive experience for me, and I look forward to a similar interaction, an opportunity to engage with the viewers and listeners with your help. Today, we do see that our system is under tremendous stress because of certain well-known deficits. And those deficits are affecting the health of our nation as well as the mindset of our people. There is development deficit, there is legitimacy deficit, of course, there is governance deficit spreading all over. Now, what can youth do in such a setting? We have to remember with due attention that Indian national movement and many other countries' social transformation had great contribution by the youth and the students. In case of India, our great tradition of student and youth activism goes back to last 100 years, right from resisting and protesting partition of Bengal to the groups which created networks of activists among the students from Bengal to Bhopal and from Mumbai and Pune to Kashi and Allahabad. The great martyrs of Indian national movement like Sardar Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Ashfaq Ullah, Lahiri, they were all icons of youth of their time, and they are still venerated much more than any of the politicians today by the young India. Secondly, there is a great youth dividend, demographic dividend, where 65% of our population is below 35 years of age group. So they are in a majority today. They can make much change and difference if they have certain consensus and collective concerns. The student population of India has also grown very significantly in last 25 to 30 years. From a few million in colleges and universities, they are in several crores. Unfortunately, the youth of India, particularly the students, are feeling suffocated because they do not have platforms. And if they have student unions and student and youth organizations, they are being ignored or they are being incited to get into identity politics issues. Problems of communalism and casteism are dividing the youth of the society today. So it is important that there is a growing interaction among the students and youth about the problems of today and challenges of tomorrow. It is the youth who challenges the outgoing generation, their ideas, their programs. They have the legitimate concerns about the affairs of the country and society because we are going to be handing over a situation which has to be either appreciated by them or to be suffered by them. Today, if you look at economy, it is suffering crony capitalism and power of black money, which was the mandate to the new government led by Shri Narendra Modi. Unfortunately, they have forgotten the mandate and they are busy in some other issues. Politically, the political parties
and the election system. Both are infected by unfair practices. Within party, there is nepotism, lack of internal democracy, and power of money bags and vote banks. In election system, there is too much of pollution from panchayat to parliament. I was a candidate for parliament from Delhi. I got nearly 500,000 votes. But I know that there was abuse of state apparatus as well as use of money power by the winners and even some of the losers. And this has become a viral problem. If you have bad election system, if you have dirty politics in the name of party politics, of course it will affect the health of democracy, the system of governance, priorities of the country, and function of the parliament and assembly and the panchayats. So to make democracy work, to make the system connected with the people and their priorities, it is responsibility of the society, particularly challenged before the youth, to act as bridle, as speed breakers, as motivators and moderators of the present political class. So, in my opinion, this is not very hard job. In 1960s and 70s, in my own student days, we had great icons like Ram Manohar Lohia and Jayaprakash Narayan, who understood the agony of students and challenges before them. They helped us in articulating our voices for democratizing education system, for attending the problem of unemployment, for challenging the people who were perpetuating corruption. This was Navnirman movement of Gujarat, which created such a protest that even homemaker mothers and sisters, an army of India sided with the youth and their concerns. Similarly, in Assam, there was this protest by Assam students, and they were so popular that they became one day the alternative to prevailing political elite. In VP Singh's time, it was the students and youth of India who supported a man who was without a party, without a social and political instrument. And one day, Sri VP Singh himself became Prime Minister of the country. Even today, Sri Narendra Modi enjoys a lot of popularity among the students and youth of India, but there is now growing disappointment. So to come back to the basic point, youth and students of a society determine the direction of the country in terms of its political, social and economic programs and priorities. Today, if you are uncomfortable with what is happening around you and you feel concerned and you feel that the country is lagging behind, is trapped in a vicious circle of black money, bad politics, and wrong policies, you must speak up. And today is much easier than in the 70s and the 80s and the 90s because of the power of media, the social networking capacity, and the inclination of people to join the youth and trust the youth, as evident during Nirbhaya protest about violence against women, or during Lokpal movement led by Anna Hazare. So to sum up, today you have more capacity to communicate, you have more numbers, majority is on your side, and you have a better perspective about various alternatives and opportunities. As you know the world better, you see the things happening around the world in different countries and in your own country in different states. So take up courage and be concerned and join each other to make things better for tomorrow. Thank you, Anandji. I'm going to take the first question from Munindra Pandey from Rewa, Madhya Pradesh. He says, I feel today nationalism is the key driver in politics, but only one party, BJP, is talking about it. But they have hidden communal agenda. So my question is, do you feel that there is huge space with nationalistic ideology in the political segment, and should we go with this? It's a very important question, and I thank you for that, because nationalism is of two varieties. One which is exclusive, where you try to connect problems of the country in the name of nationalism
with certain sections of the society within the nation. And often you become aggressive with your neighbors in the name of national interest, as was followed by Hitler. First, he persecuted the Jews, which were a minority in their own country, and then communists and socialists and Democrats who were opposing Hitler's Nazi politics. And then he invaded Czechoslovakia and Poland and other neighboring countries and pushed Germany as well as whole of Europe into a war. The other kind of nationalism is inclusive, where your nation's definition includes all human beings belonging to a territory like India or any other country, and you also have potential for connecting with rest of humanity, because the idea of nation and the idea of human civilization must try to approach each other. And this was articulated by people like Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, and many others who became the icons and who became the inspiration for other nationalities to fight for their own freedom and for dignity and justice. Today, you are right that nationalism is appropriated and monopolized by a particular party, and it reduces the idea of nation state into a particular religion, and within religion, a particular gender. And this makes the idea of nation very dangerous. And in the name of national interest, then people become aggressive to their own brothers and sisters. All people born and living in India are India. We are the nation. And there is no one who can claim to be issuing certificate of patriotism and nationalism to anybody else. We all have to work together. And the task is nation building, promoting we feeling rather than othering some of us and then thinking of doing service to the nation and actually contributing to the disintegration by promoting social disharmony and social violence. Not a good idea. It's a very important consideration, and we must all see whether my task is to contribute to nation building, or am I willingly or unwillingly becoming part of destroying the national unity. Right. Next question is from Kushal Agarwal from Jorhat, Assam. He says, what opportunity we have where we can apply as a governance students? I think here it should be useful if we can discuss about opportunities to study governance as a curriculum and opportunities to build a career in governance and policy making. You see that with the 73rd and 74th Amendment, there is now challenge before the younger generation to make the bodies of grassroots democracy and governance like Gram Panchayat, Jila Parishad, and City Council into more meaningful bodies, because that's where most of us live much of our life. That's where most of our problems are located. And young people, as educated citizens of India, because anybody above 18 years of age is a voter and an active citizen. They have some citizenship duties. So if you can use RTI, it will not affect your studies. You don't have to waste your time in things which are beyond your classroom or beyond your college life, and still you can contribute. You have to be vigilant and concerned citizens. They say that vigilance is the price of liberty. And today you see Neta Raj and Babu Raj, and then ultimately surrendering to Gunda Raj. So your collective concern through Facebook groups, WhatsApp groups, and as individual citizen using RTI, and of course blogging, commenting, responding, meaning that if you become concerned and active citizen, your studentship can become an asset, because in a country with only maybe 15 to 20% people of your own age group of 17 to 23 having the privilege to go to schools and colleges, you are a privileged part. You are a better off person. You have more intellectual weight. Please use it and contribute to the country. Right. We have lots of people asking about membership of Swaraj Abhiyan. So I just want to let them know that to become member of Swaraj Abhiyan, you have to give a missed call at
011 669 777 662. Our representative will contact you and make you member. If you have access to internet, then kindly visit our website and become a member by clicking on join us now. If you already are a member and you want to know your membership number, kindly call on 011 669 777 660. You will hear your membership number on this. Another question, in fact, lots of people are asking this question. So the question is from Narendra Singh, Punjab, Pushpendra Verma from UP, Ashok Nagar from Rajasthan. They are saying that will Swaraj Abhiyan form a party in near future? Whether is it will contest any elections in state due in early 2017 in Punjab, UP, Assam, or Uttaranchal? It's a very important question. First of all, in Punjab, there is a by-election in a assembly constituency called Khadur Sahab, where a citizens forum has been created to present a challenge to the ruling coalition of Akali Dal and Bharatiya Janata Party, as well as the previous ruling party, the Indian National Congress. And this candidate was there as Aam Aadmi Party Lok Sabha candidate, Bhai Baldeep Singh. He is one of the founder leaders of Swaraj Abhiyan India. And he is a cultural icon who has been engaged with his constituency even after Lok Sabha election. We will be supporting him as a citizens candidate, and we will be calling upon Swaraj Abhiyan activists to help him in all possible ways. तन मन धन तीनों से उनकी मदद करना है, क्योंकि ये आमने सामने की लड़ाई हो रही है एक खराब सरकार और एक अच्छे उम्मीदवार के बीच। इसमें आम आदमी पार्टी चुनाव में नहीं है, लेफ्ट पार्टियां चुनाव में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं है। ये तिकोना मुकाबला है और भाई बलदीप के साथ खड़े होना हर अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है। In case of Aam Aadmi Party related discussions in the past, when we started Swaraj Abhiyan in April 2015, it was decided that we will take around 6 months' time to go around the country to feel the pulse of the people, to listen to the voice from the ground. And we have organized by now 24 state conventions and conferences, and we have taken feedback from the people. Secondly, we also wanted to change our work pattern, and to make it people-centric, we picked up 4 issues. One was the problem of peasants and land policy. We had created Jai Kisan Andolan. Then we also established an initiative to address the problem of students and youth. We called it Shiksha Swaraj. Both became national initiatives. Against corruption, a very vibrant community of RTI and PIL activists is growing, and their platform is being created by asking all of them to come together in Delhi on 27th and 28th February under the initiative of some of the founders of Swaraj Abhiyan. And we are also working for communal harmony, which is under threat, and we are establishing Aman committees. Now, with these 4 initiatives and 24 state conferences, we have found that there is an urge to create alternative political party, not routine political party which doesn't share its sources of income, its pattern of expenses, which has no respect for its members and volunteers, no internal democracy, and which always looks for winning at every cost, even at the cost of their principles and programs. So we hope that if we are able to create 100 or more members in 100 or more, at least 100 districts of India. India is a large country, and it will be meaning around 15% of the country, and at least 4 states out of 30 states. Then we will be in a position to say that we have some foothold, there is some social and political basis. But that is in future. We have started membership campaign, and as Priyanka ji pointed out, those who are interested in alternative politics
must consider very seriously to become member of Swaraj Abhiyan and get into a process where some of the best people of the country today, most idealist people of the country today are working very hard for last 8 months, and there are good results also. You know that if there is a good political party connected with the people, tragedies like Rohit Vemula's suicide will create a situation where there will be networking at the national level. Rohit Vemula became victim of bureaucracy and political pressure, and it needed a platform where someone like Rohit could have gone. But Ambedkar Student Association was not connected with the larger political system, and actually it was under attack by the mainstream political parties. So suppose there was an alternative political party, an email from Rohit Vemula could have saved a precious life, because then there would have been a national network at his command and disposal. Similarly, there is a challenge to Richa Singh, the first woman president since independence at Allahabad University Student Union, and she is being harassed by orthodox forces. She is not allowed to work as voice of the students. There is also another student youth movement, Occupy UGC, which is demanding scholarship support of a minimal kind to all research scholars of India, so that India enters into knowledge age. There is much need of investing in higher education and advanced research, but not money is there. Private sector doesn't encourage research. So they are there for last 6-7 weeks and nobody listens to them. So yes, to come back to your question, we are considering and working very seriously to move towards closer engagement with the electoral system and party system. But we want an alternative party system, and we want a cleaner election system. Thank you, sir. The next question is from Manish Kedial, Dehradun, Uttarakhand. He says, a general perception is that many youth think that Swaraj Abhiyan is just a social organization more than a political organization. The leadership seems to have lack in trust to give lead in hands of youth to run program and activities in states. How Swaraj Abhiyan is going to interact with youth and encourage them to join Swaraj Abhiyan for political reforms? It's a good question. देहरादून से लेकर के दिल्ली तक ऐसा लगता है कि स्वराज अभियान का काम कुछ नॉन पॉलिटिकल जैसा है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि आज राजनीति को हम लोगों ने सिर्फ चुनाव तक सीमित कर दिया है। जो चुनाव में नहीं है वो राजनीति में नहीं है। लेकिन आपको देखना होगा कि स्वराज अभियान के 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। मैं खुद दिल्ली से लोकसभा का उम्मीदवार था और हमारे साथी प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हरियाणा से थे। ऐसे ही ढेर सारे लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया है। लेकिन राजनीति का जो बड़ा अर्थ है राष्ट्र निर्माण, सत्ता प्रतिष्ठान की नीतियों पर अंकुश लगाना और राजनीति के जरिए राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाना, इसमें हमने पिछले 8 महीने में जो काम किया उस पर ध्यान दीजिए। जमीन पर कब्जा करने के लिए अध्यादेश ला रही थी सरकार और हमने उस लैंड एक्विजिशन बिल पर 10,000 गांव में जाके संपर्क किया, रैली की, हमारे वॉलंटियर्स को लाठियों से पीटा गया और हमारे नेताओं को रात भर थाने में बंद रखा गया। इसको आपको राजनीति का हिस्सा मानना चाहिए। ये समाज सुधार जैसा कोई मोर्चा नहीं था। ऐसे ही हमने शिक्षा के सवाल पर देश भर के शिक्षाविदों और छात्र छात्राओं को इकट्ठा किया और शिक्षा स्वराज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक कार्यक्रम देश भर में फैलाने का काम किया। हमारे कुछ साथी पीआईएल के जरिए और जन यात्राओं के जरिए सूखे से पीड़ित 2/3 हिंदुस्तान की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और इससे ढेर सारे अकाल पीड़ित लोगों को राहत मिल रही है। तो ये राजनीति के कुछ पहलू हैं। हमने सांप्रदायिक दंगों में सक्रिय हस्तक्षेप करके हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ पहल की है। अभी इन कदमों के जरिए हम राजनीति के व्यापक अर्थ को सामने लाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि गांधी जी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था,
वो म्युनिसिपैलिटी से लेकर पार्लियामेंट तक के कभी मेंबर नहीं थे। आजादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण कभी किसी चुनाव में न तो उन्होंने उम्मीदवारी की और न किसी सदन के सदस्य थे, लेकिन ये देश के दो सबसे बड़े और सबसे सफल राजनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है शाहबुद्दीन एफी देवली दिल्ली से। ये कहते हैं, देश के संवैधानिक आदेश निर्देश क्या स्वैच्छिक हैं? यदि नहीं तो इस पर अमल करना अपरिहार्य है तो ये धारण करने योग्य है, और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो इन सब का इशम संविधान में निहित है, तो संविधान को धर्मानी देश क्यों नहीं घोषित किया जाता और इस पर अमल करने वाले को आस्तिक और उल्लंघन करने वाले को नास्तिक घोषित किया जाना चाहिए। आप स्वराज की बात करते रहे हैं। जो देशवासी अपने देश की संविधान को ईश्वरीय आदेश मानकर निष्ठावत करते हैं वही स्वर्ग पाते हैं। अभी जो चल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं धर्म के नाम पर समांतर रूप से काम कर रही हैं और संवैधानिक लक्ष्यों को पाने में बाधा बनी हुई है। कल में बैठी हुई व्यवस्था को वर्तमान में जीने की जिद है, तो हजारों साल पुरानी समय के संविधान को अगर अमल करते तो कलयुग से सतयुग लाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको इतने सुंदर सवाल और दृष्टिकोण के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि हमारी अपनी भाषा में नागरिक का स्वाभाविक धर्म है कि वो राजनीति में निगरानी और जिम्मेदारी की भूमिका निभाए। आधुनिक समाज को बनाने के लिए हमें जो साझी एक आचार संहिता हमने बना ली, हमारे बुजुर्गों ने बना के दिया, जिसको हमने संविधान कहा, उसको मानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी व्यवस्था में जो संविधान का विरोध करते हैं उनको सजा देने का प्राविधान है। लेकिन जब देश के नेता, देश के मंत्री संविधान विरोधी बातें हरकतें करें तो उसका लाखों लोगों पर बुरा असर पड़ता है, और उनकी निगरानी अगर नागरिकों ने नहीं की तो फिर संविधान कागज पर लिखी कुछ इबारतें रह जाती हैं। आज ये जरूरी है कि हम इसको पहचानें, और इसी को हम नागरिकता निर्माण कहते हैं। जैसे हम हिंदू का निर्माण धार्मिक ग्रंथों से कर रहे हैं, मुसलमान का कुरान शरीफ से कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के जरिए हम सिख बनते हैं, बाइबल के जरिए हम ईसाई का रास्ता समझते हैं। भारतीय होने के लिए जो हमारा धर्म कहिए, जिसको आप ड्यूटी अंग्रेजी का शब्द कहिए, या जिम्मेदारी या कर्तव्य मानिए, क्योंकि धर्म भी बुनियादी तौर पर कर्तव्यों की आचार संहिता है, हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, राजनीतिक दल, ये तीन मोर्चे हैं जिन पर हमको इस नई जिम्मेदारी को, नई पहचान को लोगों तक आदर के साथ पहुंचाने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, आज बदकिस्मती से सरकारों में भी ऐसे लोग हैं जो कानून तोड़ करके, संविधान की धज्जियां उड़ा करके, कुछ मुट्ठी भर वोट के लिए देश को बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। ये गलत लोग हैं इनका, लेकिन मुकाबला करने के लिए हमें खुद गलत नहीं होना चाहिए, वैकल्पिक राजनीति के मोर्चे बनाने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपकी भाषा, आपके विचार और आपके सुझाव तीनों का हार्दिक समर्थन करना चाहता हूं। Thank you, Anand ji. Just want to take a moment to touch base on anti-corruption endeavors that Swaraj Abhiyan is working on. We are developing the most comprehensive website of anti-corruption, which will be launched on 28th of Feb, in which people will be able to file RTI online. They will be able to report corruption of their local areas. People can also learn about RTI, all the important information like CAG reports, anti-corruption acts, and bills will be available on this portal. So I'm going to take another question, which is from Ashok Nagar, Rajasthan. He says, राजस्थान में स्वराज अभियान के लिए कोई भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, क्या क्यों ना कोई मीटिंग करके नई टीम बनाई जाए? अभी हम लोग राजस्थानी नहीं, पूरे देश में आधे अधूरे तरीके से काम कर पा रहे हैं। मैं चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मुझे मालूम है
कि हमारी ताकत तो देश की जरूरत है, देश की भावना है और आप जैसे लोगों का सरोकार है, लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हमारे जैसे लोग बहुत अच्छी तरह से आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये सुझाव देना चाहूंगा कि 3 कदम हमको उठाने पड़ेंगे स्वराज अभियान को देश का औजार बनाने के लिए। नंबर 1 तो तत्काल मेंबर बनना चाहिए। 6697762662 इस पर अगर आपने मिस कॉल किया तो आप पहला कदम पूरा कर लेंगे। 66977662 और उसके पहले दिल्ली का पिन कोड जो प्रियंका जी ने बताया था 011। दूसरा, आपको हमारी वेबसाइट पर आकर के जो स्वराज अभियान का विधान है, स्वराज अभियान का नीति वक्तव्य है, न्यू एजेंडा फॉर इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसको देख लेना चाहिए, जिससे कि आप समझ लें कि हमारी दिशा क्या है और हम अपने संगठन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा, जो राजस्थान में आप जहां पर हैं वहां के स्थानीय लोगों का एक संपर्क करना चाहिए। बहुत जल्दी 3 महीने की सदस्यता अभियान के बाद हर राज्य में और हर जिले में सम्मेलन होने जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा, नई टीम जिसमें कि कुछ पुराने होंगे, कुछ आप जैसे नए होंगे, हम और रफ्तार से बढ़ेंगे। मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अप्रैल के चुनाव के बाद किसी ज्यादा सक्षम, ज्यादा योग्य और ज्यादा लोकप्रिय स्त्री या पुरुष के जिम्मे इस काम को सौंप करके एक पूरे समय के वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो रहा हूं। Next question from Pradeep Ghaziabad. Uh, should youth be involved in active politics as full-timer? Elaborate, please. Pradeep का एक और question है कि some of my colleagues are involved in AAP. How to convince them for Swaraj Abhiyan? देखिए, आज के यूथ के लिए ये जरूरी है कि वो 2 चीजों में फर्क करें। एक होता है धंधा, जिसके जरिए आप रोटी कमाते हैं, अपनी बुनियादी निजी जरूरतें पूरी करते हैं, और दूसरी है ड्यूटी या जिम्मेदारी या धर्म, जिसमें आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जैसे आप नौकरी करते हैं धंधे के रूप में और मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं धर्म की ड्यूटी के तौर पर, वहां के साधनों को आप अपनी रोटी के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसमें कुछ देते हैं। पूर्णकालिक राजनीति अपने आप में उसी व्यक्ति के लिए ठीक है जिसके अपनी निजी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आधार है। अगर आपने राजनीति के जरिए रोटी कमाई तो उससे ज्यादा गंदा काम कुछ हो नहीं सकता, जिसके कारण ढेर सारे लोग कहने को तो नेता हैं, नायक हैं, लेकिन वो खलनायक हो जाते हैं। वो राजनीति के जरिए पैसा कमाने लगते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जहां तक किसी एक पार्टी का आपने जिक्र किया, उससे स्वराज अभियान में लाने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए स्वराज अभियान के साथियों का जो काम है, इसके जो आंदोलन है, इसके जो कार्यक्रम है, उसमें उनको निमंत्रित करिए। उनको आपके विचार से ज्यादा हमारे काम को देखने का मौका मिलना चाहिए। जैसे अभी देश भर के लोगों का हम आह्वान करते हैं और विदेश के भी लोगों का आह्वान करते हैं कि 27 और 28 फरवरी को हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त राष्ट्रीय मोर्चे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि जब भ्रष्टाचार से कोई लड़ रहा होता है या होती है, सोचते हैं कि हम क्या करें। आप देखिए कि आरटीआई कैसे करना चाहिए, हम कहां जाएं। आपके लिए एक वेबसाइट बन रही है जो 28 तारीख को लॉन्च होगी, और हमारी कौन मदद करेगा इन जबरदस्त दबंगों के खिलाफ। तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े सामाजिक लोग, कानून जानने वाले, समाज में असर रखने वाले, इनका एक मंच फिर से आपके सामने वैसे ही आ रहा है जैसे अन्ना आंदोलन के समय में हम लोगों ने बनाया था और जिसने देश को बदलने का उत्साह पैदा किया था। लेकिन किसी को एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में लाने के लिए बहकाना नहीं चाहिए। ये समझदार लोग हैं। अगर इनके सामने बेहतर विकल्प सामने आता है काम से हमारे, तो उनको आने में दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे कार्यक्रमों में स्वराज अभियान के जय किसान आंदोलन, शिक्षा स्वराज अभियान, एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म और अमन कमेटी के कामों को और स्थानीय स्तर पर स्वराज केंद्र के कामों को दिखाइए। उन्हें अच्छा लगेगा तो वो जरूर आपके कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हो जाएंगे। Thank you, sir. I also want to make announcement about donations.
You can send your checks in the name of Swaraj Abhiyan or you can do NEFT transfer. The details are available at our website in the Donate Now section. By the end of next week, we will start our online donation drive. We promise that we will show details of all our donors on the website and utmost transparency will be maintained. We have published our income expenditures details. Please check it and Andolan on our website under activism. So the next question is from Vivek Singh, Jamshedpur, Jharkhand. Sir, I'm from Jharkhand, associated with social sector and help rural youth in Jharkhand in getting jobs through skill enhancement. You might be aware that Jharkhand is one of the most politically unstable and corrupt state of India. It is because politicians are inefficient and not capable of raising social issues and resolving it politically. Youth in Jharkhand is being carried away by Naxalites or being used by politicians during elections. My question to you is that what will be the role of Swaraj Abhiyan in states like Jharkhand to make youth aware of political rights and help them participate in electoral process to make the change required? मुझे आपका सवाल बहुत गंभीर और चिंताजनक लगता है, क्योंकि झारखंड राज्य का निर्माण आंतरिक उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए और झारखंड की अस्मिता को विकास के साथ जोड़ने के लिए किया गया था। आज आपने जो कहा उससे लगता है कि झारखंड में लीडरशिप डेफिसिट है, प्रोग्राम का अभाव है और आदर्शवाद की जगह अवसरवाद ने जड़ें जमा ली हैं। मेरा आपसे सुझाव होगा कि आप स्वराज अभियान के कार्यक्रम को देखें, अपने जैसे 10, 15, 20, 25 लोगों को इकट्ठा करें, हमें आप संपर्क करें। हमारा नंबर होगा 011-669-77662। सदस्य बने, जिससे कि आपके बीच में चर्चा के लिए 2 दिन 3 दिन का शिविर किया जाए और झारखंड की मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया जाए। बिना हमारे आगे आए ये परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है, बिगड़ने वाली है। नेताओं को काले धन का चस्का लग गया है, परिवारवाद की बीमारी हो गई है और भ्रष्टाचार का आनंद मिलता है। इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए बेहतर लोग चाहिए जो ईमानदार हों, चरित्रवान हों, साहसी हों और जिनके पास दूरदृष्टि हो। अभी आपको प्रियंका जी ने कहा, स्वराज अभियान ने पिछले 8 महीने आपस के सहयोग से ही अपना अब तक का काम चलाया है, जिसमें 24 राज्य सम्मेलन किए, एक राष्ट्रीय आंदोलन किया, बड़े दौरे हुए। अब हमें देश से पैसा मांगने का नैतिक साहस आ गया, क्योंकि हमने अब तक जो पैसा इकट्ठा किया उसका पूरा हिसाब भी वेबसाइट पर डाला है। हम अकेले संगठन हैं जो अपनी आमदनी और अपना खर्चा दोनों साफ साफ सबको बताते हैं और हमारा कोई छिपा रिश्ता किसी से नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं, आज राजनीति के बिगड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम राजनीति से मदद तो मांगते हैं लेकिन राजनीति की मदद नहीं करते। हम अपनी तरफ से चंदा नहीं देते, हम सदस्य नहीं बनते, तो फिर गलत पैसा और गलत लोगों के कब्जे में राजनीति जाने से कौन रोक सकता है। आइए स्वराज अभियान के जरिए देश को स्वस्थ राजनीति के लिए मदद करें, देश की जरूरत को पूरा करें। Next question is from Amit Ahmed, Delhi. He says, why should we start democratic process before the party announcement? This is very high moral ground. Why do we need that before? देखिए, पार्टी बनाना बच्चों का खेल नहीं है और ये मोहल्ले की या शहर की पार्टी या धंधे में लगे हुए कुछ मुट्ठी भर लोगों की पार्टी या किसी जाति और जमात की पार्टी बनाना तो बहुत आसान है। पूरे भारत यानी 1 अरब 30 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाली पार्टी बनाने के लिए पूरे देश को पहले पूछना पड़ेगा। आप इस देश की राजनीति में अगर असरदार योगदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आम लोगों की आवाज को सुनने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आपने आम लोगों की बात को सुन के उनके विचारों के अनुकूल पार्टी बनाई, उसका जीवन बहुत दूर तक जाएगा। आपको याद होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा बनकर के लौटे तो भी उन्होंने साल भर तक, हमने तो कुल 8 महीने का समय लगाया, गांधी जी ने साल भर तक कोई भाषण नहीं दिया।
पूरे देश में उनके गुरु गोखले जी ने कहा देश को देखो और समझो। हमको भी और आपको भी लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक फैले इस विराट राष्ट्र को जानना चाहिए। हम खाली अपने आसपास के 100-200 किलोमीटर को भारत मानते हैं, अपने इर्द गिर्द की जिंदगी को ही भारत की जिंदगी और उसकी समस्याएं मानते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि एक अच्छी पार्टी बने, लेकिन उसके लिए जो जरूरी इंतजाम है, गांधी जी ने तिलक महाराज के निधन के बाद कांग्रेस को बनाने के लिए 1 करोड़ धन और 1 लाख जन की बात की थी। हम तो खाली 5,000 राजनीतिक सक्रिय आदर्शवादियों को तलाश रहे हैं और उसके साथ जरूरी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए छोटे छोटे चंदे मांग रहे हैं। उसके लिए कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। Another question from Amit Ahmed is, if Swaraj Abhiyan constitution is super, but followers are not right, who will implement the constitution at that time? ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही। जब कोई नियमावली बनती है तो उसको बताने का काम उस नियमावली को बनाने वाले संगठन का होता है। हम बहुत जल्दी सदस्यता अभियान के बाद हर सक्रिय सदस्य के लिए स्वराज अभियान के विधान का प्रशिक्षण करेंगे, ट्रेनिंग कैंप करेंगे। स्वराज अभियान के नीति वक्तव्य, जिसको हम कहते हैं न्यू एजेंडा फॉर इंडिया, उसका भी कैंप करेंगे। इसकी शुरुआत हम राष्ट्रीय कमेटी से करने जा रहे हैं। हम अगर नियम को जानेंगे नहीं तो उसका पालन भी नहीं कर सकेंगे। आप जानते हैं मोटा नियम है, लाल बत्ती पर रुको और हरी बत्ती पर चलो। इसके लिए भी बच्चों को बताना पड़ता है, स्कूल में बताना पड़ता है, नागरिकों को बताना पड़ता है, फिर भी लोग नियम का पालन करने में वक्त लगाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नियमावली अच्छी बन गई है, उसके पालन के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसमें हमारी तरफ से पहले ट्रेनिंग कैंप, पहले हम बता तो दें कि क्या तरीका है, फिर लोग नहीं मानेंगे तो उसका भी समाधान किया जाएगा। Another question from Ajay, यमुनानगर, हरियाणा। सर, क्या भारत में मेडिकल हर किसी के लिए फ्री नहीं हो सकता? दुनिया के अच्छे स्वस्थ लोकतांत्रिक देशों में स्वास्थ्य का अधिकार एक असरदार अधिकार है और भारत को भी उधर ही जाना है। असल में तो 1977 में जो दूसरी आजादी की सफल क्रांति हुई थी, उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल करके एक पूरी योजना ही बनी थी, जिसको जनता पार्टी की सरकार ने लागू करने की शुरुआत की थी। लेकिन उनके आपस के कुर्सी के झगड़ों ने सरकार गिरा दिया और उसके बाद से स्वास्थ्य की पूरी समस्या और उलझ गई। इधर जो नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की शुरुआत हुई, उसमें भी भ्रष्टाचार के कारण, आपको मालूम होगा NRHM घोटाला, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला, जिसमें कई डॉक्टर मारे जा चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद जेल में है और उससे जुड़े भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ऐसे ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का देश को शर्मनाक हालत में पहुंचा चुका है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नकली मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने की समस्या सामने आई है। तो एक तरफ दवाओं में घोटाला, दूसरी तरफ भर्ती में घोटाला, तीसरी तरफ योजना में घोटाला। स्वास्थ्य सेवा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्रस्त है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सबको जैसे हवा, पानी, शिक्षा, रोजगार, वैसे ही स्वास्थ्य और आवास का अधिकार है और उसकी योजना बननी ही चाहिए। Thank you, sir. Next question from Jatin Seth, Ahmedabad, Gujarat. Sir, do you have any action program for Swaraj Abhiyan? I wonder, I'm asking this question again and again, as I had attended your first program at Gurgaon, and then I asked you the same question during Ahmedabad visit, along with Yogendra ji. I have yet to find answer. Youth needs action program other than speeches and sermons, and that too positive and constructive. I agree with you that not only youth but even citizens need action program, because action is the test of policies. और ये कहा गया है कि 1000 भाषण की तुलना में एक काम करना ज्यादा अच्छा है। हमने पिछले 8 महीने में जमीन के सवाल पर एक्शन प्रोग्राम किया था। मुझे अफसोस है कि आपका हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। गुजरात से भी कई 100 गांवों से मिट्टी लेकर के लोग जंतर मंतर पर 10 अगस्त को पहुंचे थे। आप उसमें नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। इसी तरह शिक्षा स्वराज का कार्यक्रम हमने उठाया है, जिस पर हमने
नवंबर 9 को दिल्ली में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, और अब उससे हम हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अमन कमेटी का काम शुरू हुआ है, जिसमें हम हर नगर में और हर जिले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में, बौद्ध और जैन और पारसी और यहूदी के बीच में संवाद और समझदारी का रिश्ता बनाना चाहते हैं। और चौथा है आरटीआई और पीआईएल एक्टिविस्ट की सुरक्षा और उनको ताकत देना। इसके अलावा हर जिले में हम स्वराज केंद्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इनमें से इन 5 कामों में जो पसंद आए, आप हमसे संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ें और हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि आपने अभी तक रुचि रखी और हमसे आशा रखी, और आज भी आप गूगल हैंगआउट में आए हैं। मैं आपकी जगह होता तो कहता, भाई ये तो भाषण वीरों का संगठन है, इन्होंने 2 बार मुझसे बात की, कुछ किया नहीं, लेकिन किया है साथी। आपसे हम डीलिंक हो गए, कोई बात नहीं, आइए आज से जुड़ के आगे चलें। थैंक यू आनंद जी। अगला क्वेश्चन है रविंद्र मलिक सोनीपत हरियाणा से। ये कह रहे हैं, आनंद जी आप ये बताएं कि आप देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी मिलकर भी अरविंद को गलत कारणों से को पैसा लेकर देने से क्यों नहीं रोका? आंदोलनकारियों की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों होने दिया? और स्वराज के जरिए क्या आप पंजाब के लोगों को अरविंद की दोगली मजहबी राजनीति से बचा पाओगे? एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये आरोप हम पर लगा, खासतौर पर श्री प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी पर, कि उन्होंने चुनाव में गलत टिकट दिए गए लोगों का प्रचार नहीं किया, बल्कि ये भी कह दिया कि उनको तो हराने की कोशिश की। मैं खुद उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जिसने 20 लोगों को कारण बताओ नोटिस दी थी, उनको बुलाया था, उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कोशिश तो हमने की, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई जीत हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो फिर हारे हुए पक्ष को लोग गलत मानते हैं। आज दिल्ली के विधानसभा में 67 सीटों पर बैठी हुई आम आदमी पार्टी का नेतृत्व तो समझता है कि उसने सही किया। आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो अगर वो सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि हमको तो जनता ने मदद कर दी है। ऐसा ही हर सत्ताधारी सोचता और सोचती है। आपसे मैं जरूर कहूंगा कि अपने विरोधी के बारे में भी एक नरम भाषा इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़े। हम इसका विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम कोई मुरव्वत नहीं कर रहे हैं। अगर हमने कांग्रेस, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, भारतीय जनता पार्टी जो आपातकाल के विरोधियों के मदद से बनी पार्टी का नाम है, और जिसने दूसरी आजादी की लड़ाई में काम करने वालों का मार्गदर्शन लिया, और आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन के परिणाम के रूप में सामने आई, हमने तीनों का विरोध किया। और हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर नाराज नहीं हैं, हम खाली ये कहते हैं कि सही काम के लिए सही रास्ते से चलो। काले धन के जरिए चुनाव जीतोगे, सांप्रदायिकता के जरिए चुनाव जीतोगे, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, काला धन बढ़ेगा, फिर शुभ नहीं बढ़ेगा, अशुभ बढ़ेगा। और हम आपकी भावना के साथ हैं। आपका आह्वान है कि आप भी स्वराज अभियान से जुड़िए। हरियाणा को भी आप जैसे लोगों के नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है। So next question from Sunil Kumar from Muscat. He says, in current time, when anybody raises concerns against government functions, then immediately he is considered as anti-national or potential for getting abuses. How a youth can come out with such hurdles? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सत्ता का अहंकार है कि जो लोग गलत सही तरीके से कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं कि वही सच के ठेकेदार हैं, जबकि अक्सर वो भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। जो लोग नागरिक के नाते ये कहते हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, इनको सुधारो, उनको वो देशद्रोही मान लेते हैं। ये उनका अहंकार है। ये अहंकार रावण को भी था, जिसने अपने भाई को अपने दरबार से अपमानित करके निकाला, जब उसने कहा कि तुम सीता को ला करके गलत कर रहे हो। ये अहंकार दुर्योधन को भी था, जिसने 5 पांडवों को वनवास के लिए मजबूर किया था। लेकिन आखिर में ये आज हजारों साल के बाद भी लोग कहते हैं कि रावण और दुर्योधन गलत थे।
आप भी आज सही हैं, ये सत्ताधारी गलत हैं, और ये तो कुल 5 साल के लिए चुने गए हैं। इनका तो इतिहास में नामो निशान मिट जाएगा। आपको याद है कि आपके बहुत पहले लोकनायक जयप्रकाश जैसे आदर्शवादी, निर्मल, निर्दलीय राष्ट्र नायक को भी उस समय की अति शक्तिशालिनी इंदिरा जी ने एक तरह से विदेशियों का और भ्रष्टाचारियों का एजेंट कह दिया था। उनको जेल में बंद किया, 19 महीने जेल में रखा। लेकिन आज इतिहास जयप्रकाश को लोकनायक मानता है, इंदिरा जी को तो उनकी पार्टी के लोग भी करीब करीब भुला चुके हैं। घबराना नहीं, सच की राह सीधी है। कभी कभी चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारा नागरिक कर्तव्य है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि आजादी के लिए निगरानी की जरूरत है। विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। और हमारे अधिकारों पर डाका डालने के लिए हमेशा निहित स्वार्थी तैयार रहेंगे, क्योंकि आपके बोलने से उनको असुविधा होती है। लेकिन अगर एक आदमी ने भी चोर को चोर कह दिया तो सारा समाज जाग के उसके पीछे पड़ जाएगा। हम आपके साथ हैं। 27-28 फरवरी के बाद तो एक राष्ट्रीय मोर्चा बनने जा रहा है, एक हेल्पलाइन होने जा रही है, जिसमें साधारण से साधारण आदमी के साथ हम खड़े होकर के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी का मुकाबला करने में उसकी मदद करने की शुरुआत करेंगे। Thank you, sir. Just want to take a moment to mention about Swaraj Abhiyan's grievance cell. We are a zero tolerance organization. If you find any wrongdoings of any office bearer of Swaraj Abhiyan, then you can report by writing at grievance@swarajabhiyan.org, and we will take proper action. Next question is from Sandhya from Chennai, Tamil Nadu. Sir, I, as a Swaraj Abhiyan volunteer of Tamil Nadu, it's a great challenge for us to motivate students to come to the ground to work for alternative politics. The awareness is seen to a great extent on social media, but when it comes to the ground level, it seems nearly impossible. What is your take on this? I agree with you. We are going through collectively this challenge. When you talk about the correct way of doing a thing, when you talk about challenging a wrongdoer, or you talk about a new initiative, you go through, Sandhya ji, 3 stages. First of all, people ignore you, upeksha. Then, if you persist, then they ridicule you, upahas. And then, if you survive that phase of ridicule and still continue without any ill will, then people start rallying with you. This has happened with all great reformers. We are all ordinary small people. If we are suffering this ignoring or ridiculing, do not get discouraged. Only thing is, you must not change. You must maintain consistency. And your power is only power of truth and honesty and selflessness. I think in your case, let's have a small gathering of friends in Chennai, sit together for a few days at a stretch, or maybe meet once a week for next 3 to 4 weeks, so that you all come closer to each other, trust each other, and create a collectivity. 1 plus 1 can become 11 if there is harmony, mutual trust, and unity of purpose. 1 minus 1 becomes 0, and that's where much of idealist energy gets wasted. I think you have some very good people in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, who will be your reference point, your icons, and they'll be very happy to get in touch with you. Thank you, sir. We are approaching the end of this hangout, so I'll just take a last question before I ask you to say some closing words for us. The last question I'm taking is from Pankaj. He's from Patna, Bihar. He says, what are the criteria for selection of candidates to be supported or nominated by Swaraj Abhiyan? Rasul Bhai, we are yet to contest any election on Swaraj Abhiyan banner. We have some general principles for alternative politics, and they apply to election contesting also. First of all, there should be social roots for any initiative, including entering election. People should be interested, keen. We should not be paratroopers coming
to a community or society for their support on the basis of money power or caste power or communal power. Second, the person who is to be presented as our candidate in future must be a person of integrity, substance, and experience. We cannot allow untested people in the name of family, in the name of caste, or in the name of religion to become a contestant. Third, there should be also clean and sufficient amount of resources as campaigners and campaign material. Finally, there should be a down-to-earth action agenda. And it should not be only about what I will do after getting elected. It should be also what I will do even if I don't get elected. Because election has become a little distorted. Once you enter public arena, no matter who gets the majority of votes, all those who got into the contest and got some support become responsible and accountable for the well-being of the area as vigilant citizens and interested activists. Thank you, sir. It was very enlightening to know your views on youth and alternative politics. If you could make some final comments before we say goodbye to everyone. प्रियंका जी, आपने जिस तरह से बातचीत को कंडक्ट किया उससे दो बातें हुई। एक तो सुनने वाले साथियों में जो सवाल थे स्वराज अभियान से लेकर के देश की दशा तक के बारे में वो चर्चा हो गई। आपने मुझे बीच में युवाओं का देश में जो योगदान हो सकता है और जो आज के चैलेंजेस हैं उन पर भी बात करने का अवसर दिया। आई एम वेरी सैड विद द ट्रेजेडी ऑफ रोहित वेमुला इन हैदराबाद। I feel ashamed that Richa Singh, President of Student Union of Allahabad University, is being harassed by goons and antisocial and communal elements, and a leader in the making is being prevented from representing the students' voice. I also feel concerned that there is growing drought and many state governments stretching from Karnataka and Andhra to Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are nearly indifferent till Supreme Court intervened. I am amazed with the arrogance of power of the people who are involved from tip to toe in corruption and are brazenly ignoring the judicial accountability. It is time for citizen activism. It's time for alternative politics. But for that, if there is a forum created 8 months ago and which is growing, which is holding the test of time, it's time for others who want India to be a better country, who want Indian democracy to be a healthy system, and who want Indian youth, particularly, to be concerned and active and effective citizens. Please come forward. Join us. Join us as member of Swaraj Abhiyan. Help us in Jai Kisan Andolan, Shiksha Swaraj, Aman Committee work, and Anti-Corruption Conference. Last, please help us with your time, with your ideas, and a little bit of your pocket money also. Good work needs good money. And finally, and last, there's a big conference which may turn out to be a milestone, a turning point, a great initiative on 27th and 28th February at Constitution Club of New Delhi. Find time and resources to attend it. If you can't, send your suggestions and send your friends to attend it. I hope that I'll have another opportunity, maybe next month, for another Google Hangout. But today, I feel very happy because this was one more very positive experience with the help of a good moderator like Priyanka ji and alert participants who sent me a variety of good questions. Thank you everyone for your time. Thank you, Anand ji. Thank you, Priyanka. And thank you, Neeraj ji. And thank you, all of you.